ओके, आप क्या एक स्टूडेंट हो या कैसे आपका बैकग्राउंड अगर Okay, so first thing, my name is Rajeshwari. I'm हुँ, from Hyderabad and ओके, I have come here as an international student. ओके। So I'm studying on my master degree in course digital marketing. ओह, वेरी नाइस डिजिटल So मार्केटिंग अच्छा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का तो। yeah, actually, when I was in India, I was working as a social media हुँ, for हुँ, Accenture company. Then after that, I moved to UK for a better scope and everything. हुँ, And हुँ। then I joined Portsmouth. So now I'm working on my masters. Oh, yes. So apart from this, like many of the in my comment section, na, in the YouTube section, comment section, they ask like student can do the part time as a care worker or not. So I have told many times in my videos that anyone can do the part time as a care worker, but like the concern. So I believe you are working as a care worker, so you are the better person to explain. So it's like working in a care home. If you haven't worked in India or in your home country, Mm-hmm. so it will be bit tough because the patient whomever you met they are not kids, so they are Right. like about 70, about 80 age. So it's Right. like holding their legs, holding their hands, and like changing the pad, giving a bath to them, and Mm-hmm. like the uh, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है Right. 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 बोलते हैं ना कि ब्रेन बच्चों जैसा हो जाता है. तो Mm-hmm. दे आर एक्चुअली नॉट द मैच्योर्ड पेशेंट्स. हम पेशेंट्स नहीं बोलते हैं, वी कॉल देम रेसिडेंट. So they are President. not Okay. mature resident, but they are like a kiddish. So you Mm-hmm. have to manage them. जैसे हम बच्चे को सँभालते हैं, उन्हें भी हम उसी तरीके से हमें सँभालना है. If they are getting angry or if they are beating you, you Mm-hmm. can't beat them back. You can't get angry on them because you're working Oh. at somewhere where you have to keep lot of patience. So Right. Right. if you're not a kind of person who has lot of patience or something, Mm-hmm. then you won't be able to work in care home. So that's what matters. Oh, great. But how did you switch your career from digital marketing to care home? Like you should search some jobs in your area. Yeah, I did actually. Even I got two offer letters from the Mhm. companies in UK, and Okay. they wanted me to work full time. And as a student, I have Mm. no rights to Right, work right, full right. time. Makes sense. Mhm. So that's the reason I requested them, if you have any part time opportunity, I'll be Mhm. happy to work with you, or else I can try after my course. So they asked me to Okay. try after once I finish my degree. So I said okay, fine. But until that time, I cannot sit at home and I can't focus on only on education, right? So I Right, need right. to fulfill my needs everyday routine. So for that, I thought to join Kerom. Before that, I have worked for a Subway, but that was like he was giving me a lot of work, so I used to get tired and I had no time to do other things. So that's why I left that and I joined Kerom. Makes sense. So, for the beginner who wanted to join care home or he who wanted to pursue their career as a care worker, so do they should have prior experience like in UK? Okay, so if you are in UK, if you are a student and if you are joining care home, you Mhm. don't need any prior experience because wherever you join, they will give you training. At least 2 days of training happens, Okay. and after that, live training also they give. Like some people they ask you to do for 1 week, some Mhm. people ask you to do for 2 days. Because I got 2 days of training. That's like a we Okay. call it shadow. Shadow Mhm. means like you're working in a live hospital, like live care home Care home. where Okay. a senior carers are working and you're watching Mhm. them for 2 days Right. continuously. You have to do that 2 days, and from Okay. third day you can work on a board. Like you get on board, like you will work by yourself. There will be Okay. nobody to help you. हुँ। So it's like 2 दिन का ट्रेनिंग के बाद हुँ, हुँ। आपको वो काम करना स्टार्ट करना है. ओके मतलब अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टिल ही और शी कैन वर्क इन अ केयर Still होम। he can join. Like there are ओके, some agencies who charges for training, and some ट्रेनिंग are ओके, like some gives free. So it's like up to the agency. राइट, राइट। सो इन दैट शैडो ट्रेनिंग पीरियड इफ द पर्सन जॉइन्स तो वो पेड रहता है ट्रेनिंग और या पेड नहीं रहता या अनपेड रहता है वो? No, the one training you get before you go on a shadow period, हुँ, that's a हुँ, paid one. That's like around 80 pounds आपको ले 80 pounds आपको लगेगा. So वो वाला पेड है, जो वो लोग आपको एक जगह पे बुलाएँगे, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बुला हुँ, के हुँ। देते हैं. The other one shadow, you will go in a care home where you will get trained by a senior carers. ओके। एनवायरनमेंट कैसा रहता है केयर होम में वर्किंग का? क्योंकि मैंने वर्क किया है बट नॉट एज़ अ केयरर। इन केयर होम आई हैव वर्क्ड एज़ अ किचन असिस्टेंट, नॉट एज़ अ केयरर। सो मैंने देखा है लाइक कि व्हाइल यू आर वर्किंग इन अ केयर होम, किसी भी पोज़ीशन पे हो लाइक आपका केयर वर्कर के साथ या रेज़िडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता ही होता है। लाइक कुछ न कोई रेज़िडेंट चिल्लाता होता है या कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, हमेशा शोर और वो तो रहता ही रहता है, मैंने देखा है। व्हाइल आई वाज़ इन द किचन मैं आई कैन हियर लाइक देयर वाज़ वन लेडी हू कंटीन्यूअसली लाइक स्क्रीम लाइक Yes, they scream entire night. There are like some resident who cry entire night, हुँ, हुँ, who just like they just roam around entire night. They don't even sleep.
You have Mhm. to make sure that they are safe and they are not going anywhere out of care home, and they are not leaving their room. They are sleeping, they are eating on time, they're doing everything, like everything on time. This is your responsibility if you are on shift. So I'll be honest with you, because whatever I speak in my video, Mhm. I just speak Mhm. whatever I have faced You in have felt my correct. journey. Mhm. So it's like the first day when I went to care home, I Mhm. got a paralyzed resident who was like Oh. totally paralyzed. Mhm. His leg was like swallowed and बोलते हैं ना कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। Right, right, right. उसके पूरे दोनों पैर ऐसे सूज गए थे एंड वो इतना रो रहा था। मेरा पहला दिन था वो शैडो के बाद, Mhm. शैडो हो चुका था मेरा और Mhm, वो mhm. मेरा पहला दिन था लाइव, मतलब मैं शिफ्ट पे थी, प्रॉपर शिफ्ट पे। और मुझे पहले दिन ही 1 टू 1 दिया गया और वो बंदा Oh. इतना थोड़ा मोटा था और इतना रो रहा था Mhm. अंदर रूम के अंदर और बार-बार बेड के नीचे गिर रहा था। आप सोचो मैं 55 केजी की लड़की और वो 80 किलो का बंदा, मैं कैसे उठाऊँगी? Makes तो sense, makes अगर sense. मैं अगर ये वीडियो में बोलती हूँ तो लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं लाइक वी आल्सो वर्क इन केयर होम, वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, यू आर लाइंग एंड एवरीथिंग। आई हैव अटेंडेड दिस थिंग, आई हैव Mhm, एक्सपीरियंस्ड दिस mhm, थिंग। mhm. लाइक कैसे हुआ था उस दिन, वो रो रहा और मैं लिटरली पूरे रूम में कैसा होता है, लाइट रात भर बंद रखनी होती है आपको। Mhm, आप mhm, लाइट ऑन रख नहीं सकते। और कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बोलते हैं कि टीवी देख सकते हो, आप टीवी देखते बैठ mhm. जाओ। और कुछ रेसिडेंट ऐसे होते हैं कि टीवी भी अलाउ नहीं करते हैं, बोलते हैं कि Correct, correct. रेसिडेंट को डिस्टर्ब होता है, तो आप टीवी मत देखो, जस्ट स्विच Mhm, ऑफ टीवी एंड सिट डाउन इन द कॉर्नर। तो बेड है, आपका एक चेयर रहेगा, आपको चेयर पे रात भर बैठना है। और बोलते हैं ना, वो मैं लिटरली पहली बार मैं बहुत डर गई थी, लिटरली मैं रोने Oh. वाली थी। वो रात भर इतना चिल्ला रहा था बिकॉज़ आई Mhm. नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस दिस काइंड Makes ऑफ sense, दैट। makes sense. मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया था बट Mhm. नॉट दिस काइंड ऑफ जॉब लाइक एवर आई हैव Oh, डन। okay. लाइक आई एम टेलिंग देम अबाउट माय एक्सपीरियंस, लाइक देयर आर सो Mhm, मेनी केयर होम्स। डिपेंड करता है कि कुछ केयर होम्स में इंडिपेंडेंट भी होते हैं रेसिडेंट, जो खुद mhm, का काम खुद करते हैं, हमें सिर्फ उन पे नज़र रखना होता है। दैट्स लाइक इट्स दैट विल बी लाइक वेरी गुड काइंड ऑफ जॉब, लाइक यू एनीवन कैन डू दैट। But mhm. staying with a paralyzed patient and entire night he's screaming and you have to make them, calm, and you have to make them silence. That's not a easy job. It's like a very tough. So what sort of a salary care workers can get, like from if they are working through the agency or directly with a care home? What So sort there of a are salary? like types of agencies. Some Mhm, agencies gives for 13 to 14 pounds. I do have friends who mhm, take 13 to 14 pounds hourly, mhm. and where I work, I get 10 pounds hourly. So it's Okay. like मेरी 12 घंटे की जॉब होती है, बट Mhm, उसमें से जो वीकली हमारा जो 20 आवर्स का टारगेट होता है, उसके mhm, हिसाब से अगर शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे 20 घंटे की सैलरी मिलती है। बाकी जो एक्स्ट्रा 1 आवर मेरा बच जाता है, 12 घंटे में से 1 घंटा ब्रेक होता है, mhm, तो mhm. ब्रेक का दे डोंट पे। Oh, सो so you're working with the agency or directly with the care home? नो, आई एम गोइंग थ्रू एजेंसी। So they do provide the transport or the like transport fare or Yes. anything? Yes, they do provide transport, but for that also they charge 10 pounds, like 5 going, 5 coming. It's like two side. Okay, two side 5 pound. Okay. That thing I wanted to know, like, how do you feel working in a care home? Because it's so difficult, I know. Maybe I talk in my videos about like a very bad thing about my care home job, but when I'm on shift, I give my 100% because of me, I don't want someone to get harmed. Mhm, सो mhm. मेरी Makes वजह sense. से किसी को चोट नहीं Makes sense. पहुँचनी Right, चाहिए, right, किसी right. को हार्म नहीं होना चाहिए। सो वो मैं मेक श्योर करती हूँ और मैं जो यूट्यूब पे बोलती हूँ वो रियलिटी में बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। तो मैं इस किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप केरम जॉइन मत करो या फिर Mhm. केरम जॉइन करो। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू वर्क यू कैन जॉइन, गेट अ Okay. एक्सपीरियंस। दिस इज़ आल्सो Mhm. वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये इम्पोर्टेंट है ऐसा एक्सपीरियंस होना, बिकॉज़ कहते हैं ना, केरम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ लोग बहुत रिचुअल वे में चले जाते हैं कि मुझे बड़ों की सेवा करने का मौका मिलता है। Mhm, mhm, तो मैं लाइक मेरे को लगता है मेरे माँ-बाप हैं जिनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। mhm, मैं उनका छोड़ के मैं दूसरे माँ-बाप का कर रही हूँ, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट mhm. कभी-कभी मेरे सामने ऐसा भी हुआ है कि मैं एक रूम में बैठी हूँ और मेरे बाजू वाले रूम में पेशेंट मर गया है सुबह उठने तक। तो दैट Oh. इंसिडेंट हैज़ हैपेंड टू मी एंड आई वाज़ लाइक पूरी रात वो बंदी ज़िंदा थी और सुबह 7 बजे वो लाइक लिटरली शी डेड एंड आई एम लाइक उठने के बाद। Mhm, और mhm, मैं बाजू वाली के रूम से उसका हो गया तो मैं उसे वॉश देने जा रहे थे हम लोग, मैं और एक सीनियर केयरर। लिटरली देखा तो वो मर चुकी थी। तो इट्स लाइक बोलते हैं Ush. ना, काम कर रहे हो बट यू हैव टू बी हैव दैट रॉक हार्ट। एकदम Mhm. कड़क दिल होना ज़रूरी है, बिकॉज़ इफ यू आर लाइक अ वेरी इमोशनल पर्सन और एनीथिंग देन इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू टू स्टे इन केयर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम।